बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ ब्रायन टिक्सल मौजूद हैं। ये फार्मर हैं, जैसे पाकिस्तान में आप फार्मर हैं वैसे ही ये फार्मर हैं। कुछ सीधा सवाल करूँगा डेयरी फार्मिंग के हवाले से और फिर आपको साथ में उर्दू में बताता भी जाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। सो ब्रायन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू इन पाकिस्तान। So it's been really nice to be with you. So I have some questions related to dairy farming. In Pakistan, the people, they are more inclined towards taking more averages, more milk and more milk. Every farmer wants to have a milk production of like 30 liter average, 32, 35, 40. So what your take on? Is it something they should focus on, or there something they are missing? Well, in Australia, we went through a stage in the 1990s of more milk was better. And what we ended up finding after a fair few people went broke is that more milk is not better. More profit is better. Yeah. So you have to work out, or in Australia, you have to work out what you can afford to what you make to make sure that you get a good profit at the end of the day. So that's my take on the farming. I don't know anything about Pakistan farming, but from Australia farming, we just know that we can't spend more than we make or else we have a problem. Okay. थैंक यू। मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान में ना लोगों को शौक है कि यार मेरी एवरेज जो है मेरे गवांडी से 2 लीटर ऊपर होनी चाहिए। मेरी 30 है तो इसकी 32 हो, इसकी 32 है तो इसको 35 हो, मैंने 36 पे लेके जाना है। तो क्या ये आपके ख्याल में ठीक है या कुछ चीज़ ऐसी है जो हम मिस कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 1990 के राउंड अबाउट लोग यही सोचते थे कि यार ज़्यादा दूध लिया जाए, लेकिन अब लोग इससे हट गए हैं और लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा दूध नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात मेरे दिल को लगी है। ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हम ऑस्ट्रेलिया का आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रॉफिट को जो है ना जी वो फोकस करते हैं। और मेरा ये ख्याल है डेयरी में रहना है तो प्रॉफिट को ही फोकस करना होगा। 1000 लीटर दूध पे अगर मैं एनुअल 2 लाख प्रॉफिट कमा रहा हूँ और अगर मेरा 900 लीटर दूध होता है, मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर लेता हूँ, प्रॉफिट मेरा 2.5 लाख हो जाता है, तो मेरा ख्याल है ये 900 लीटर जो है ना इस 1000 लीटर से फॉर बेटर है। देखना है कि ऑप्टिमम दूध कहाँ पे आता है। हो सकता है दूध ज़्यादा लेने के चक्करों में खर्चा मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, of course you have 2000 cattle in Australia, is it? Yep. Okay. 1,000 milking cows. 1000 milking cows. So what do you think when you are getting the milk at a very high production, like a cattle which is producing 40 liters milk a day? Does anything it affect the reproduction of cattle, like giving more milk, facing difficulty in getting pregnant? No, it doesn't actually affect more. Or once you go over a really high level of milk, it is hard to get cows pregnant. You have silent heats and heat detection becomes harder. So it does. The really top end milk production is harder to deal with and harder to keep control of. It's a harder management. So you take, when there is more milk production, there can be the problems with the breeding. So what is that milk production? Is it 40 liters milk a day? Is it 50 liters a day? Is it 55 liters a day? Where you think the cow may face difficulty in getting pregnant, in your experience? Well, in Australia, we don't talk about litres because in Australia we don't get paid for the total solids. We don't get paid volume. We actually just get paid for solids. So we like to talk in solids. And if you can produce around your 2 kilos to 2.2 kilos solids, there is no trouble with that. But when you're trying to get higher than that, it becomes difficult. And then to try and maintain it in the off season, because we go into summer, it gets hot and dry like you guys. So it's harder to keep maintaining that production in that hot times. मैंने से पूछा है कि जी अमूमी तौर पे ये बात की जाती है कि जब जानवर ज़्यादा दूध देता है तो उसके प्रेग्नेंट होने में मसला बन जाता है। वो कितने लीटर को आप ज़्यादा गिनेंगे? क्या ये 40 लीटर है या 45 है या 50 है? तो इन्होंने ये बताया है कि हमारे यहाँ चूँकि वॉल्यूम में दूध सेल नहीं होता, हम सॉलिड्स में दूध सेल करते हैं। इनके मुताबिक अगर 2.2 kg सॉलिड्स एक गाय प्रोड्यूस कर रही है तो इनको ब्रीडिंग के मसाइल नहीं आते। जब 2.2 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे इनको जो है ना जी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हैं आ जाते हैं प्रेगनेंसी के हवाले से, कि साइलेंट हीट आ गई, एनिमल हीट में था पता नहीं लगा, या वो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अपना एक्सपीरियंस मैं पाकिस्तान में लीटर्स के हवाले से शेयर कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन कैटल के साथ 40 लीटर दूध तक हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, लेकिन जब कोई कैटल 45 या 50 से एक्सीड करती है
तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें एफर्ट करनी पड़ती है जानवर को प्रेग्नेंट करने के लिए। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ लैक्टेशन एट योर फार्म? At my farm, What you're getting up from your Australian cattle? my farm is probably a little bit less than the average, where I would only get my 4 lactations per cow. And that is mainly because I'm trying to lift my genetic merit of my cows. So I sell cows before they're ready to be sold. I sell them on genetic merit. Oh, that's a pretty very difficult decision you're making. It's really difficult decision to sell cows just on the basis of their net merit. Well, that's that's the way I do it, and that's how I get such a high indexing herd. So you said you are just below the average. So what's the average in Australia? It's over 5 lactations per cow. मैंने इनसे पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। देखें ना, फार्मर जो होता है ना जी, वो राह पे जाने थे वाह पे जाने, वो मैं अक्सर बात करता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि कितने सूए आपके फार्म पे जानवर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में एवरेज है उससे मैं थोड़ा नीचे चल रहा हूँ। कितना? कहते हैं मेरे पास 4 सूए की एवरेज है फार्म पे। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं मेरे पास थोड़ी इसलिए है कि जानवर को मैं जल्दी सेल कर देता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने जानवरों की जेनेटिक्स को बेहतर करूँ, जानवर को थोड़ा सा मैं जल्दी सेल कर देता हूँ। मैंने पूछा कि एवरेज लैक्टेशन ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, तो ये बता रहे हैं तकरीबन 5 के करीब जो है। ये चूँकि फार्मर हैं, डाटा बड़ा आप कह लें कि रियलिस्टिक और 2000 कैटल है इनके पास, तो इतनी जो है ना माशाल्लाह ये ले रहे हैं। सो व्हाट इज़ द calving interval एट योर फार्म? My calving internal would be around the 340 days, so it's not quite 305. Calving or interval, 365. It's a lactation length of 340. your lactation length is 340 and your calving interval from one calving to another. What is the period, average period? A little bit over 12 months. A little bit over 12 months. So you are doing something extraordinary. Well, Believe me. I don't run a crossbred herd. I run a pure Holstein herd. So we calve 2 to 3 times a year in Australia. So we actually just go back adjoining as we're going. That's how I get a longer lactation. As fertility is getting better, like 15 years ago, Australians' fertility, as the US fertility wasn't good with Holsteins, but it is improving so much in the last 5 years with genomics, and we will get better at it as we're breeding better cows, and we always look at our fertility on when we pick bulls, and we will get better at it. मैंने से पूछा है जनाब कि आपका एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला, जिसको हम काविक इंटरवल कहते हैं, वो क्या है? तो ये बता रहे हैं कि इनका सूबा तकरीबन 340 दिन का है, और जो इनका काविक इंटरवल है वो 12 महीने से कुछ ऊपर है। तो ये तो मैं कहता हूँ जी कमाल है, कमाल ही कमाल है। हमारे यहाँ पर हमारे पास जो बहुत अच्छे मैनेज्ड फार्म हैं वो तकरीबन 420-415 दिन के राउंड अबाउट जो है वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। सो coming back few years, there was a time when American bulls were used in Australia for breeding of your cattle. Right now you have your own index, the BPI, and you have your own bulls. So why do you shift from American bulls to your own homegrown bulls? Well, American bulls have always come into it since the 1980s, late 1980s. American bulls have been coming into Australia, and there's always been a local component that we've always had our own index. And at certain times, American bulls are better than the Australian bred bulls, and in certain times, the Australian bred bulls are better than the American bred bulls. So on my own farm, I still do use some American bulls, but I only use the very, very best. Right now, are you using any American bull? Yes, I still use American bulls and Canadian bulls. Really? But they're all around 900 net merit plus. Oh. And they're all, I only use the very best. I have had a look around, and there is bulls coming in from America into Pakistan that are 2200 TPI, and they're actually below average because 2300 is average TPI. So they're not even an average bull. So what should be an average net merit? What do you think? On the net merit, I actually don't know what average is. Yeah. But I know TPI average is 2300. Okay. So if you're using a 2200 average bull, Below average. that's below average. मैंने इनसे पूछा जी बुल्स के बारे में, अमेरिकन बुल्स और ऑस्ट्रेलियन बुल्स जो है, सीमन का आपको पता है। अब आप ये बात गौर से सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलियन बुल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ,
मैं अमेरिकन बुल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कनेडियन बुल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने फार्म पे, ठीक है जी। तो एक मैं आपको ये बात बड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि यार ये यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बहुत अच्छा है, वो फलाना कहता है अमेरिकन बहुत अच्छा है, एक बंदा नया आता है वो कहता है भाई न्यूजीलैंड का बुल ले लें। देखिए मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि हर कंपनी के पास अच्छे बुल मौजूद है, सिलेक्ट करो भाई। हो सकता है कि आपके फार्म के लिए कोई अमेरिकन बुल बहुत अच्छा हो सकता है कि आपके फार्म के लिए कोई कैनेडियन बुल जो है आप बड़ा सूट करता हो आपके जानवरों को, हो सकता है ऑस्ट्रेलियन बुल आपको बहुत सूट करता हो। ये आपने देखना सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब ये बता रहे हैं कि जो भी सिलेक्शन करते हैं चाहे अमेरिकन है या जो भी है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुल लेते हैं। अब ये बता रहे हैं कि 900 नेट मेरिट से ऊपर ये बुल सेलेक्ट करते हैं। और एक बात इन्होंने और ऐड कर दी है कि 2300 TPI को ये एवरेज कंसिडर करते हैं। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान में आपके 2200 TPI के बुल आ रहे हैं, तो आप लोग बिलो जो एवरेज है TPI इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि कम से कम 2300 से ऊपर बुल इस्तेमाल करें। मैंने इनसे पूछा है कि अगर आप एवरेज नेट मेरिट की बात करें तो वो इनके इन्फॉर्मेशन में नहीं है, वो इन्होंने बता दी है। लेकिन ये ज़रूर बताया कि 2300 जो है ना जी एवरेज TPI से ऊपर की बात करें तो इनके केस में ये कम से कम 900 से ऊपर वाला जो है नेट मेरिट का बुल जो है ये अपने फार्म पे इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रीडिंग करने के लिए अपने जानवरों के लिए। तो यहाँ पर एक तो ये भी क्लैरिफाई कर लें कि आपके लिए कौन सा जानवर आपके फार्म की ब्रीडिंग के लिए बेहतर है। ना सुने किसी ऑस्ट्रेलियन की, किसी अमेरिकन की, किसी, देखें आपके फार्म के लिए बेस्ट कौन सा है, बेस्ट बुल सेलेक्ट करें तो वो आपके फार्म पे जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, इवन यू हैव हॉटर मंथ्स इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी हॉट मंथ्स ड्यूरिंग समर, even then your cows they're grazing in the field like in 36 degrees Celsius or even more than that. How is it possible? They do graze in the paddocks. We are starting to build sheds to put them in for the really hot times. So what's the maximum temperature in your area? My maximum temperature in our area is 45 degrees Celsius. 45. So do you let your cattle graze at 45 degrees Celsius? Well, they stand under trees, but they do go out in the paddock, and because that's the only place they can go. It's really amazing. It's really amazing. But they are just in the fields. So during the hotter days, they are getting under the shade of a tree. And if anyone wants to graze, she's going in, getting the feed, coming back to the shade. It's amazing. But we only do it twice a day too. Like we don't do it 3 or 4 times milking. But that's what they have to do. And some cows handle it better than others, and that's why we're building heat tolerance, because we're hoping to make a cow that can handle the heat much better. Okay. And we will get better at it over the next 5 to 10 years working on heat tolerance. That's great. The cows will get better. मैंने बड़ा अजीब जवाब है जी। मैंने कहा जी आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर आपके इलाके में कितना है? ये बता रहे हैं जी मेरे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मैंने पूछा कि क्या ग्रेजिंग पे लेके जाते हैं जानवरों को? ये कहते हैं जानवर ग्रेजिंग पे जाते हैं, जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है वो जो दरख्त हैं उनके साए के नीचे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो साड़ी गाय तो नहीं खिलौती पाई दरख्त तो गाय जो है वो दरख्त के नीचे आ जाती है, जिसने फीड लेनी है, ग्रेजिंग करनी है, ग्रेजिंग करती है, दोबारा नीचे आ जाती है। तो ये तो बड़ा हैरानकुन बात है। हम तो यहाँ पे 35 के नीचे गाय को बाहर नहीं निकालते, उसको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। और ये कह रहे हैं कि हम हीट टॉलरेंस जो है ना एक फैक्टर है, इसको बहुत जो है ना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अगले 5 सालों में इनका ख्याल है कि हम और ज़्यादा हीट टॉलरेंस जो है अपने जानवरों में डेवलप कर लेंगे। देखिए ये बातें हैं, सीखने की चीज़ें हैं। मेरे पास फार्म पे गायें मौजूद हैं, बड़ी गर्मी करती हैं जी, और कुछ गायें हैं जो इतनी हीट स्ट्रेस नहीं करती। तो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। आप जेनेटिक्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, हमें भी इनसे सीखना होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ब्रायन। It's nice talking to you because the information you have giving to me is totally practical. So thank you very much for your time. अच्छा एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ, सॉरी, जो हीट टॉलरेंस है इस वक्त अगर आप उसका ट्रेड चेक करना चाहते हैं किसी भी सीमन कैटलॉग में, तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स इस पे काम करती मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, ये ना हो कि कल को आप CRI को फ़ोन कर दें, CRB को फ़ोन कर दें, सानू दसो तो बुल दी हीट टॉलरेंस की है। अभी तक वो आ जाएंगे, मुझे लगता है वो उनको आना पड़ेगा। अब फॉर एज नाउ अभी तक के लिए अगर कोई बंदा इस पे काम कर रहा है हीट टॉलरेंस पे, तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ग्रेजिंग करनी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मई बुल के कैटलॉग देखें, वहाँ पे हीट टॉलरेंस मेंशन की हुई है और नीचे 1 और 2 पे उसको दिया गया है। उसकी जो हीफर्स हैं वो उम्मीद की जाती है कि आगे ज़्यादा हीट टॉलरेंट होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी कंपनीज़ भी इसको इन्फोसिस करेंगी और ज़रूर करेंगी। ले जी आज तक के लिए इतना ही।
अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।